नमस्ते सर। Hello everyone, namaskar. नमस्ते सर। नमस्ते 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 सर। नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर। नमस्कार नमस्कार। On the way to Rangoon, while taking Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor, to exile, the British policeman said him these lines: दमदमे में दम नहीं है, अब खैर मांगो जान की. दमदमे में दम नहीं है, अब खैर मांगो जान की. ए जफर, ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की. For which Zafar's reply was, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की. गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की. तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की. A very warm good evening everyone. Welcome to our webinar session on the topic that is 1857, a mutiny or a national war of independence. I, Siddharth, of first year from BA program, here before you on behalf of Dadhichi, the competitive society of Rajdhani College, University of Delhi. Dadhichi is the society which is one of the most renowned and eminent civil services society in the entire DU circuit. Our society is helping students to prepare for various government exams through several means such as seminars and webinars which are organized on various different topics. All this won't be possible without the guidance and support of our principal, Professor Rajesh Giri sir, and our convener, Dr. Rajiv Ranjan Giri sir. I would like to introduce our speaker of this session. Today we have Dr. Khurshid Alam sir as eminent speaker. He is an assistant professor in Department of History at Janki Devi Memorial College, University of Delhi, where he has specialized in teaching medieval and ancient Indian history. He holds a PhD in history from Aligarh Muslim University. He has been a part of many national and international conferences, and being a prolific writer that he has his credit a number of research papers in various national and international journals and books. He is currently engaged in a book on female Sufi saints of medieval Delhi. It is our honor today to listen to him on this topic. Before that, I would like to inform all our audience to kindly help us in maintaining the decorum of this webinar. To unmute yourself is not allowed at any cost, and you will be immediately removed. There will be a question and answer session at the end. Hence, please get ready with your queries. You are requested to type your questions in the chat section. They would be addressed one by one. Now, I request our Honorable Principal, Professor Rajesh Giri sir, to deliver the welcome address. Sir, please. सिद्धार्थ पहले सबको ना म्यूट कराओ, बहुत साउंड आ रही है बैकग्राउंड से.
Please, all are requested to mute. राजीव रंजन गिरी ने ज्वाइन किया है क्या सिद्धार्थ? किया नहीं किया अभी? राजीव जी ने ज्वाइन किया है नहीं अभी? सर अभी तक तो सर ने नहीं किया है। अच्छा, चलो शुरू कराते हैं फिर। जी सर। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सिद्धार्थ। First of all, my hearty welcome to our guest speaker, Dr. Khurshid Alamji, who is from JDMC, who has taken out time to deliver this talk on is in 1857 a mutiny or national war of independence. Dr. Alam, because I'm not expert, we are here to listen to you. But before I say something, let me share some experience with this platform, Dadhichi, with you. That Dadhichi is a society, which is such an excellent society. Although we have a teacher who is convener, our colleague Dr. Rajiv Ranjan Giri, but mainly everything is managed by our intelligent, innovative team of the students. And for last many years, we have been organizing talks on variety of subjects so that we can update our students for their competitive exam, mainly for UPSC. And you know, today is Saturday, and second year, third year are appearing in university exams. Even then, my team of students, they are so smart. They have arranged this talk on this weekend. So I'm really proud of all of my dear students. I think Rajiv has not joined. He may be busy somewhere. My dear students, today I have a very mixed feeling that you must be aware that our dear colleague Rajiv Ranjan Giri, he has joined the Department of Hindi last week. And Rajiv, who has been guiding all of you, who has been motivating all of you in many ways, now we will definitely, including me, we are going to miss him in this platform. But I requested Rajiv just to guide all of you, and we are going to have a new team of teachers for this Dadhichi. And already I have requested a few of my colleagues to be in this committee, and I also asked them to be in touch with Rajiv Ranjan Giri because he has a very long experience working with all of you during last so many years. Thank you, Dr. Khurshid Alamji, for accepting our invite. That I know you are from one of our Delhi University colleges. When in today's discussion something comes from history department, history stream, so as I just mentioned in the beginning that I'm not a social sciences student, but the way history and different subject of history is being discussed. I mean, new dimensions are being coming and so many new narratives. I'm not going in detail in favor or against the narratives, but it is being going on. When I saw this topic कि 1857 का जो हमारा ये एक नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था या एक गदर था, तो मुझे भी लगा कि इस तरह के टॉपिक्स पे आई मीन इज देयर एनी क्वेश्चन मार्क। मुझे याद है बचपन में
हम लोगों ने पढ़ा था 1857 का गदर, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल नेटिव प्लेस है वो डिस्ट्रिक्ट मेरठ में आता है। तो इफ समबडी इज फ्रॉम मेरठ और उसने 1857 ना सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बचपन में बड़ी कहानी, किस्से, इतिहास, बहुत चीजें पढ़ी। अभी भी जैसे मेरे साथी हम लोग बात करते रहते हैं, क्योंकि आजकल एक नई यूनिवर्सिटी हमारे सिस्टम में इवॉल्व हो रही है, दैट इज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। Yes. उसने पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया, बट दे वेरी स्मार्ट इन फॉरवर्डिंग वट एवर दे आर रिसीविंग। इसलिए भी बहुत जरूरी है आज की जनरेशन को एक ठीक पर्सपेक्टिव में हिस्ट्री को बताने की। अभी माय स्टूडेंट दे नो इट दैट we had a national seminar on Subhash Chandra Bose, Netaji Subhash Chandra Bose, funded by ICHR. We invited the scholars from different institutions, and I could see different kind of discussions. Sometimes we are not aware. So new things are coming from different point of views, right? So, but I was thinking, बच्चों, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जहाँ इतिहास ना हो. Yes. I was just planning. Just a minute. I'm sorry, a call थी मेरी. So, what I'm trying to, share with my dear students that try to verify the facts. और मैं जो बताना चाह रहा था, I just missed it, कि बिना हिस्ट्री के कोई भी, अगर मैं अपने कॉलेज के इतिहास की बात करूं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी 100 वर्ष पूरे किए हैं 1 मई को, उसका अपना एक इतिहास है, अपने कॉलेजेस का एक इतिहास है। तो हर संस्था का अपना एक इतिहास है। Yes. और इतिहास के अलावा अभी मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले अपने साथियों से, हर विषय का अपना इतिहास है। अब किसी विषय की बात करें, उसका अपना एक इतिहास है। और वैरायटी ऑफ थिंग्स इन हिस्ट्री। आप मोन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, राइट? आप खाने की बात कर रहे हैं, आप पहनने की बात कर रहे हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं, लिटरेचर की बात कर रहे हैं। तो कोई भी बचा हुआ नहीं है इतिहास से। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे आज का यूथ है, वो एक ठीक पर्सपेक्टिव में चीजों को ले, राइट? सो खुर्शीद जी, वंस अगेन माय हार्टी welcome to you. Thank you so much. You could take Thank you. out time on this weekend, and my blessings to my dear students. I'm really overwhelmed most of the time to see their academic activism. So thank you so much. Wish you all the very best. Yes, sir. Thank you so much, sir. So nice of you, sir. Thank you so much, sir, for guiding us and encouraging us with your kind words. So, without any further delay, I would like to invite Dr. Khurshid Alam, sir, to enlighten us with his knowledge. Sir, please. Thank you. Thank you so much. A very good evening to all those who have joined today. I am Dr. Khurshid Alam, Assistant Professor, teaching in the Department of History at Janaki Devi Memorial College, University of Delhi. I would like to thank the Honorable Principal, sir, and the organizing committee of the Dadhichi Society of Rajdhani College for inviting me for today's session. The topic of today's webinar is 1857 a mutiny or a national war of independence? This topic has so much debate. Historians have different opinion about this topic. Some of the historians are of the opinion that it was a war of independence. It was the first
the struggle movement from Indian masses. British historians are of the opinion that no, it was a mutiny. Sepoys took participation in this mutiny. They stood up against this British rule, and you know, uh, so uh, इस जो टॉपिक है इसमें कई सारे हमें चीजें देखने को मिलती हैं, और इस टॉपिक पे अब तक हिस्टोरियंस ने किताबें लिखी हैं और कंटिन्यूसली किताब लिखी जा रही है कि वाज इट अ म्यूटिनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें ब्रिटिश वर्कर एंड अदर हिस्टोरियंस हैं नाम. सो व्हाई दिस revolt or mutiny happened in 1857. As we know that किसी भी इंसिडेंट, किसी भी मूवमेंट के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. वो रीजन क्या है, क्यों कर वो मूवमेंट अचानक से उठ खड़ा होता है, और उसके बाद कई सारे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट और उसके इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं. सो 1857 रिवोल्ट जो है स्टार्ट तो होता है लेकिन उसका जो बैकग्राउंड हमें बहुत पहले से देखने को मिलता है. As we know that British entered into India in the 17th century. British came with the purpose to do trade with Indian merchants, to take our things, particularly the manufactured thing, from our country to their own country. But later on, they started taking raw materials from our country to their own country. They started manufacturing in their own country, and they brought their products to India. And then after, we have seen so many things happen one after the other. So as I was sharing with you that 1857 का रिवोल्ट जो है वो अचानक से उठ खड़ा नहीं हुआ, उसके पीछे कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, एक एक करके देखते हैं. The East India Company's rule from 1757 to 1857 had generated a lot of discontent among the different sections of Indian people against the British. We know that the battle that is known as Plassey that took place in 1757. British, they established their control on eastern part of India after the Battle of Plassey. So Battle of Plassey took place in 1757, and they were continuously, plundering our country from 1757 to 1857. So what happened during these days that we will discuss in detail. The end of the Mughal rule gave a psychological blow to the Muslims, many of whom had enjoyed position and patronage under the Mughal and other provincial Muslim rulers. The commercial policy of the company brought ruin to the artisans and craftsmen, while the divergent land revenue policy adopted by the company in different regions, especially the permanent settlement in the north and the Rajdhani settlement in the south, put the peasants on the road of impoverishment. So just after the Battle of Plassey, just after 1757, they were plundering our country and they were experimenting. क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? जैसे कि पहले से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था इंडिया में ड्यूरिंग टाइम ऑफ मुगल या उससे पहले 17वीं उससे पहले एंशिएंट डेज में, तो वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रीजन कर रहे हैं. So they implemented Rajdhani settlement, they implemented Mahalwari settlement, they implemented that is a permanent settlement. So these three settlement or experiment they did one after the other. So इससे क्या होता है? इससे देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसका? पीजेंट का, किसका? फार्मर का, और साथ साथ आर्टिजन क्लास का. कैसे होता है वो देखते हैं. Because after the implementation of these three, settlement, they introduce a policy that is known as commercialization of agriculture. So जो commercialization of agriculture करते हैं या फिर उसकी वजह करके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे शुरू हो जाता है. So एक के बाद एक ये सारे रीजन हम देखते हैं कि हमारे इंडियंस जो चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो पीजेंट हो या फिर आपके आर्टिजन्स हो, सभी के लिए ये प्रॉब्लमेटिक एक के बाद एक. So ये सारे रीजन बनते हैं impoverishment and misery for whom? For the Indian masses.
अगर हम देखते हैं कि थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर देखते हैं 1857 रिवोल्ट के कि क्या क्या चीजें वहां पे एक के बाद हो रही हैं, वो देखते हैं. द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ मेजर अपहीवल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल in which the disgruntled princes, the disconnected sepoys, and disillusioned elements participated. However, it is important to note that right from the inception of East India Company, there had been resistance from divergent sections in different parts of the subcontinent. This resistance offered by different tribal groups, peasant, and religious factions remained localized and ill-organized. In certain cases, the British could put down these uprisings very easily. In other cases, the struggle was prolonged, resulting in heavy casualties. These disturbances and uprising, though did not succeed in uprooting the British power from India, became the precursors of the major revolt of 1857. As I have shared with you that के 1857 के रिवोल्ट से पहले कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो एक के बाद एक कनेक्ट होती चली जाती हैं, and these became the precursor of the 1857 revolt. So before we take up the talk of the revolt of 1857 in detail, it is important to briefly discuss the various resistance movements and upheavals. तो कई सारे हम रेजिस्टेंस मूवमेंट देखते हैं, एक के बाद एक होता चला जाता है, और उसके पीछे क्या रीजन है, ब्रिटिश को क्या प्रॉब्लम होती है, वो तो एज आई शेयर विथ यू दैट पीजेंट्स और यहाँ तक कि ट्राइबल पीपल, जमींदार, कोई ऐसा नहीं है जो ब्रिटिश के हाथों से बच जाए. सबका एक्सप्लॉयटेशन होता है, और जैसे जैसे सबका एक्सप्लॉयटेशन होता है वो स्टार्ट कर देते हैं अपने एफर्ट लगा करके अपनी तरफ से मूवमेंट. तो सो मेनी मूवमेंट्स दैट स्टार्टेड इन ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर, हर कॉर्नर से, हर तरफ से हमें इस तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं. बट एज आई सेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ माय लेक्चर दैट talk that वो इनऑर्गेनाइज था, पूरी तरह से वो ऑर्गेनाइज नहीं था, आसानी से ब्रिटिश ने उनको डिफीट कर. सो तो पहला जो हम जैसा कि इंफॉर्मेशन मिलता है हमें, भील जो है वो भील राइजिंग्स, वो कहाँ है, किस तरह से मूवमेंट करते हैं, उसके पीछे क्या. सो द भील्स वर predatory tribes living in the western Ghats with their strongholds in Khandesh. Khandesh means कि मध्य प्रदेश का, और नीचे जाएंगे towards South India, you will find they control the mountain passes between the north and the Deccan. Economic distress, famine, and misgovernment led to the uprising against the British in 1817 to 1818. The British succeeded in suppressing the Bhil rising partly by military action and partly by conciliatory policy adopted by Elphinstone. Elphinstone was the commander of the army, and बहुत आसानी से वहाँ के Bhil जो rising थी उसको क्रश करने में वो सक्सेस हो गया. However, a more serious bill rising in 1819 led to the ravaging of vast neighboring regions. The British used brutal force to subjugate the Bhils, taking the advantages of the British reverses in the Burmese War. In 1825, the Bhils rose in rebellion. Again, they challenged the British authority in 1831 and later in 1846. So they were continuously putting their effort to fight with hope British, to defeat British, to compel British to leave their area, because British were exploiting the resources of that area, and they were forcefully collecting revenue from them. So Bhil के बाद से another very important जो uprising होती है वो that was from the Ramosi. It is very important uprising. See, the Ramosi uprising was the outcome of the policy of annexation and disposition of popular rulers. The Ramosis once served in inferior ranks of police in Maratha administration. After the final defeat of the Peshwa in 1818, and the annexation of the Maratha territories by the British, the Ramosis lost their means of livelihood. In 1822, Chittur Singh of Satara gathered Ramosis against the heavy assessment of the British and plundered the neighboring regions of Satara. The Ramosis around Pune revolted in 1826 under the leadership of Umaji Naik and his supporter Bapu Trimbakji Sagar. For 3 years, the Ramosis continued to harass
the British government followed a pacifist policy, condoning the crimes of the Ramoses, granting them land and recruiting them as elite police. So here we can see the compromise that was done by the British with the Ramoses. So अब रामोसिस के बाद कौन थे देखते हैं कि स्वंतवाड़ी, ये सब सारे मूवमेंट हो रहे हैं, अपराइजिंग है अगेंस्ट ब्रिटिश just after 1757. ठीक है. So next one is revolt in Swantwadi. The events in Kolhapur had tried, had their impact on Swantwadi. The people of Swantwadi had already revolted against the British in 1830 and 1836. In 1838, the British deposed the ruler of Swantwadi for his failure to maintain law and order in the state and appointed a European political superintendent to administer the state. The discontent rulers fled to Goa and planned revolt against the British. The British authorities introduced several laws and brought the state under control. तो इस तरह से देखते हैं कि स्वंतवाड़ी के भी अपराइजिंग को देखते हैं ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी अथॉरिटी को यूज करके उनको अरेस्ट किया और ब्रॉट देम अंडर देयर कंट्रोल. इसके बाद देखते हैं रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ Vizianagaram. The British policy of land revenue led to a number of insurrections. In July 1794, the Raja of Vizianagaram openly rose in revolt against the British. The reason was that British reduced the area of his zamindari and increased the revenue payable to the British. In an encounter with the British forces, the Raja was killed along with 300 of his armed men. Following his this kind of incident, the British followed a conciliatory policy towards the son and successor of the deceased Raja Narayan Rao. So, ऐसा लगता था कि जहां पे ब्रिटिश कमजोर पड़ते थे या पड़ रहे हैं वहां पे वो फौरन उनके साथ ट्रीटी कर लेते थे और किसी हालत में चाहते थे कि वो राजा या उनके सक्सेसर या उनके फॉलोअर्स सब्जेक्ट जो है वो किसी तरह से ब्रिटिश की बात माने, बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ द ब्रिटिश वाज टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, किसी तरह से उनसे एक्सट्रैक्ट करना था, रेवेन्यू पैसे लेना था. अगेन रिपीटिंग इट टू यू कि ब्रिटिश का आने का मकसद ही यहाँ ये था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट करना है, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, चाहे वो कोई भी मीन हो, बिजनेस हो या फिर आपको रेवेन्यू के फॉर्म में हो या फिर गिफ्ट के फॉर्म में. इस तरह से सिर्फ एक ही एम था, टू प्लंडर, टू एक्यूमुलेट, टू टेक एज मच एज वेल्थ फ्रॉम इंडियन टेरिटरी टू देयर ओन कंट्री. तो ऑफ कोर्स जहां पे भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, जहां पे भी लोग सफरर होंगे, वहां पे कहीं ना कहीं देखते हैं कि वॉइस वो रेज करते हैं. तो इसके बाद कई सारे और भी मूवमेंट देखते हैं, जैसा कि अगेन जो मूवमेंट है रिवोल्ट है वो है पॉलीगास की तरफ से. Polygars on the eastern coast of India were the local military chiefs and barons within their jurisdiction. Their position was adversely affected by the company's agreement with the Nawab of Arcot in 1781, according to which the Nawab acquired the right of management and control of the entire revenue of the Teneveli and Carnatic provinces on behalf of the company. He was allowed to retain 1/6 of the total revenue. The Polygars, who had been revenue farmers for generations, organized themselves to fight against the encroachment on their right. After several armed confrontations, the company revoked the agreement of 1781 with the Nawab of Moot and restored the old system of revenue and the traditional rights of the Polygars. So, इस तरह देखते हैं कि नवाब, चूंकि बैटल ऑफ प्लासी से पहले ब्रिटिश को मद्रास में, कर्नाटक में कामयाबी मिल चुकी होती है. क्योंकि ब्रिटिश से पहले हम ब्रिटिश एंड जो फ्रेंच है वो ऐसी पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट कर रखी थी कि इंडियन रूलर्स को आपस में लड़ता हुआ देख करके वो मिलिट्री हेल्प देते थे और मिलिट्री हेल्प के बदले पैसे लेते थे. तो जो कर्नाटक वॉर में सक्सेस मिली ब्रिटिश को, वही एक्सपीरियंस उन्होंने यूज किया कहाँ पे, प्लासी में जाकर. You must be knowing about the Lord Clive. Lord Clive was a clerk in the British East India Company, और वो एक सजेशन देता है कर्नाटक वॉर में कि इस तरह से अगर आप बैटल स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपको फ्रेंच और टू
नवाब है उनके अगेंस्ट आपको जीत मिल जाएगी। और एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड। क्लाइव के सजेशन को फॉलो किया गया और वहां पे उस कर्नाटिक वॉर में उनको कामयाबी मिल जाती, सक्सेस मिल जाती है। फिर क्लाइव को भेजा जाता है कि अच्छा, आपकी सजेशन से तो हमें यहाँ जीत मिल गई, क्यों नहीं आप खुद जाए। और जो हम तो वेस्टर्न कोस्ट जो है, बेसिकली as they came as a traders and they wanted to take things from our country to their own country। लेकिन धीरे धीरे वीक पोजीशन जो है after the decline of Mughal empire, फिर मराठा इमर्ज करते हैं उन्हीं टेरिटरी पे जहां मुगल रूल करते हैं। मराठास वर रूलिंग ऑन द वास्ट रीजन ऑफ आवर कंट्री। लेकिन फिर मराठा के डिक्लाइन के बाद आफ्टर 1760 जो बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद 1761 के बाद से दिखने लगता है कि अब जो है इंडियन रूलर्स आपस में फाइट कर रहे हैं, दे हैव बिकम वीक रूल। ओके, इसका फायदा उठाते हैं। सो अब क्या पॉलिसी दिखती है, जो भी कंपनीज आती है, चाहे वो सबसे पहले हु केम टू इंडिया, तो एज वी नो दैट Portuguese came to India, Dutch came to India, British came to India, French came to India, and they all came and they established their कारखाना, they established their camp in on the coastal region। कोस्टल रीजन को अक्वायर कर रहे हैं, तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन, ईस्टर्न कोस्टल रीजन को अक्वायर करना। और जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन को जिसने अक्वायर कर लिया, कंट्रोल कर लिया, वो इंडियन ट्रेड का मालिक बन गया। तो सिंस वेरी बिगिनिंग, सिंस एंशिएंट टाइम हमने देखा, चाहे आपका मौर्यन अंपायर हो या गुप्ता अंपायर हो, या फिर बाद में देखते जो जो ट्रिपटाइड स्ट्रगल है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए फाइट की जा रही है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट को कैप्चर कर ले जाए, ट्रेड को कैप्चर कर ले जाए, गुजरात से बंगाल तक, तो पूरी इकोनॉमी आपके हाथ। ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रखा था ब्रिटिश ने, एंड व्हेन दे पर्टिकुलर यूरोपियन ने। और ये सारी चीजें पर्टिकुलर यूरोपियन में भी ब्रिटिश वर वेरी फार साइटेड, एंड ब्रिटिश की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि ब्रिटिश के इमर्जेंस से पहले स्पेन एंड पोर्चुगल का डिक्लाइन हो रहा, एंड ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड एंड फ्रांस का इमर्जेंस हो रहा। एंड ब्रिटेन ने बहुत क्विकली देखते हैं कि अपने स्ट्रॉन्ग नेवी आर्मी, बहुत ही स्मॉल और स्विफ्ट मूव करने वाली, बहुत आसानी से मूव करने वाले उन्होंने बोट्स बना लिए, छोटे छोटे शिप बना लिए, और वो लेकर के आते हैं, और उस पर उन्होंने कैनन है या फिर आपके गन है, ये सारा कुछ वो यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह करके उनको काफी हेल्प मिलती है, इसी वजह करके वो कामयाब होते हैं पोर्चुगीज को रिप्लेस करने में। डच को यहाँ से जावा सुमात्रा यानी कि आज के इंडोनेशिया, वहां पे उनको पुश करके भगाने में, और फिर बाद में फ्रेंच को डिफीट कर। तो ब्रिटिश क्यों कामयाब होते हैं, क्यों इतना? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी उनकी एडवांस है, इसकी वजह करके वो धीरे धीरे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी यूरोपियन आते हैं उनको रिप्लेस करते हैं। एंड जब उनको कर्नाटक में कामयाबी मिल जाती है, जब उनको प्लासी में कामयाबी मिल जाती है, when they got success in these two battles, they became the master of west and eastern coast of India। और धीरे धीरे पूरे नीचे तक देखते हैं, मद्रास, पूरा केरल, ये सारे एरिया उनके अंडर में। लेकिन जहां पे भी जाते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट, कि वहां पे उनके जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन रिवोल्ट और इस तरह से अपराइजिंग देखने को मिलती है। तो इसके बाद एक और जो है मुस्लिम वॉइस रेज करते हैं, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट है, दैट इज नोन एज वहाबी मूवमेंट। Why it started, that we should know. So the Muslims lost their political power with the replacement of the Mughals by the East India Company, as we know that these things. The spread of Christianity and the Western culture were viewed as a threat to Islam. They resisted English education and remained aloof from Western influences. The Wahhabi movement that was started there in Arabia was introduced in India by Sayyid Ahmad of Rajdhani। Rajdhani is the name of place that is there in Uttar Pradesh। तो वहाँ के एक सैयद अहमद हैं, वो इस मूवमेंट को अरब से इन्फ्लुएंस होकर वहाबी मूवमेंट के यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। The Wahhabi movement aimed at the purification of Islam and to return to the simplicity of religion. In India, the Wahhabis did not restrict to the religious reform only. They aimed at the replacement of the British rule by the rule of the true believers. Thus, the Wahhabi movement took the nature of the political revolt. Okay, so it was one of the important movement, and that led to the organization of one of the important movement by the Muslims against the British.
तो ये सारा कुछ देखते एक के बाद एक अपराइजिंग और मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जिससे कहते हैं कि बाद के जो धीरे धीरे जो इंडियन आर्मी में है, जो ब्रिटिश आर्मी में है, पुलिसमैन, सिपाही, या फिर जो पेजेंट्स हैं, या फिर दूसरे जो लोग हैं, उनको धीरे धीरे ये चीज दिखने लगती है, उनको समझ में आने लगती है कि these British, these Europeans have come to exploit our resources. हमें एक होकर के इनके अगेंस्ट उठना चाहिए। तो जो चीज चली आ रही है जस्ट आफ्टर दिस बैटल ऑफ प्लासी 1757 से 1857 तक, इसमें कुछ और चीजें हमें देखने को मिलती है। सिपॉय म्यूटनी की शुरुआत होती है 17th century 18th century के second half में, देखते क्या है। The first mutiny of Indian sepoys occurred in 1764 when a whole battalion from Hector Munro's forces opposing Mir Qasim at Patna joined the army of Nawab. However, they were overpowered and punished. तो क्या होता है, after the battle of Plassey, किसको रिप्लेस किया जाता है? नवाब सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को बैठाया जाता है। मीर जाफर को भी इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, इतनी ज्यादा उससे पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, वेल्थ कलेक्ट किए जाते हैं कि अब वो भी इनसे थक जाता है ब्रिटिश से, और फिर उसको रिप्लेस करके मीर कासिम को लाते हैं, एंड मीर कासिम को भी एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। एट लास्ट देखते क्या है, मीर कासिम रिवोल्ट करता है, और फिर मीर कासिम के साथ जो है पुलिसमैन, आर्मी में, वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट उठ खड़े होते हैं। लेकिन उनकी जो आर्मी या उनकी जो अपोजिशन को मुनरोज की फोर्सेस जो है वो क्रश करती है। So this was chiefly due to lack of an understanding among the British officers regarding the social and religious customs of the sepoys under the charge. In order to bring about improvement and discipline in the army, the British officer ordered the sepoys to shave their beard, to remove the caste marks from their forehead. This enforced practice created all kinds of apprehension and suspicion among the sepoys. This factor led to the sepoys to stage a mutiny in the fort of Vellore early in 1806. A British contingent in the contingent from Arcot brought the mutiny under control. In 1844, the 34th Regiment at Firozpur refused to march into Sindh. Punjab se वहाँ सिंध पे जाना। So Firozpur refused to march to Sindh. The 7th Bengal Cavalry and the 64th Regiment followed the example of 34th Regiment. The mutinous troops were marched back and their ringleaders were punished. तो देखते हैं एक के बाद एक, right from the sepoys mutinies that took place, that started in 1674 to 1804, देखते हैं कि और 1844 तक सिपाहीज म्यूटनी हो रहा है, बहुत ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, जिसको आसानी से ब्रिटिश जो है उनको क्रश कर देते हैं, उनको पनिश करते हैं। और एक चीज जो क्रिएट की जाती है, फियर अमंग दी जो सिपाहीज हैं, इंडियन सिपाहीज, जिसमें मुस्लिम हिंदू दोनों है, कि मुस्लिम्स को अपनी दाढ़ी हटानी थी और हिंदूज को अपने फोरहेड से जो मार्क है उसको हटाना था। इससे और ज्यादा देखते हैं कि अगेंस्ट ब्रिटिश थॉट इमर्ज करती है इसमें इंडियन आर्मी। अब देखते हैं कि कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या है। The small island kingdom of British created one of the largest empires in India. The adventure that the mercantile enterprises, the East India Company, had started in the beginning of the 17th century, culminated in the extensive, political domination and economic power by the middle of the 19th century. The rise of the purely mercantile company to be a permanent political entity in India had three phases. In the first phase, the activities of the East India Company were confined to trade. In the second phase, the company eliminated the European rivals through armed conflict and succeeded in establishing its trade monopoly and political influences in India. This I have shared this thing with you कि किस तरह से एक बिजनेस करने के लिए कंपनी यूरोप में बनती है, और वो कंपनी जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. It was for East. It founded for particularly for Indies, for India,
दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी बहुत तेजी से राइज करती है, और प्लस जो इंडिया की तरफ आती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जो आती है, अरेबियन सी में जो आती है, धीरे धीरे यहाँ पे पहले से जो यूरोपियन अपने आप को स्टेब्लिश कर रखे हैं उनको रिप्लेस करती है, चाहे वो पोर्चुगीज हो, डच हो, फ्रेंच हो, इन सबको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिप्लेस करके अपने आप को स्टेब्लिश किया। सो 3 फेजेस में हमें इनको देखने को मिलता है। And in the third phase, the company combined commerce with conquest and achieved unparalleled success in building up a vast empire in the subcontinent. However, during its activities spanning over century, the East India Company created conditions and let loose forces that challenged the power of the British Empire in 1857. Can be summarized as under so many causes. I would take first cause as political cause. After the conquest, the East India Company created a lot of discontent and disaffection among the dispossessed ruling families and their successor. By her conquest, a large number of dependents on the ruling families who lost their means of livelihood, and other common people were disillusioned and disaffected with the alien rule. Lord Dalhousie annexed the Punjab and added humiliation to the ruling family. Dalip Singh, the minor son of Ranjit Singh, the founder of the Sikh kingdom of the Punjab, was deposed and exiled to England. The properties of the Lahore Darbar was auctioned. So इस तरह देखते हैं कि पंजाब से शुरू करते हैं, या फिर पहले मैंने आप शेयर विथ यू कि कर्नाटक, फिर बंगाल, फिर इस तरह से पंजाब, तो हर एक जो हमारा नॉर्थ वेस्ट हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, हर जगह पहुंचते हैं और एक ही एम था, हाउ टू रिप्लेस द इंडियन रूलर्स एंड हाउ टू accumulate wealth from Indian territory. So after the Punjab conquest, we all know about the policy that was introduced by the British officer that is known as doctrine of lapse. By applying the doctrine of lapse, Dalhousie, it was created by Dalhousie. Dalhousie annexed the principalities of Satara, Jaipur, Sambalpur, Bhagat, Udaipur, Jhansi, and Nagpur. These measures manifested the lack of sensitivity of the British towards the towards ancient right of adoption among the Hindus. Since the very beginning, since ancient days, the people of India were having the right to adopt son. अगर कोई हेयर उनका नहीं है, कोई सक्सेसर नहीं है, तो किसी को भी अडॉप्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे they were very far-sighted, they were very cunning, who British were, and British जानते थे कि इस तरह के अगर हम लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं इससे हमारा फायदा होगा, इंडियन जो रूलर हैं वो अपने सक्सेसर को अपनी जगह पे नहीं ला पाएंगे, या किसी भी इंसान को अपने सक्सेसर नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे, और सारा का सारा जो स्टेट है, प्रिंसली स्टेट्स है, वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई सेंट्रल पावर नहीं है। डिक्लाइन, मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर चुका है, मराठा डिक्लाइन कर चुके हैं, नो वन वाज देयर टू चेक these kind of activities जो ब्रिटिश कर रहे हैं उसको चेक करने वाला। तो ब्रिटिश फ्री है, वहां पे कोई अथॉरिटी नहीं है उनको चेक करने वाला। जो रूलर है वो आपस में किसी किसी छोटी छोटी चीजों पे फाइट कर रहे हैं, या फिर अपने लिए सिर्फ सोच रहे हैं, और इसी का फायदा उठाते हैं। और डलहौजी जैसे, कॉर्नवालिस जैसे, क्लाइव जैसे लोग आते हैं और अपने प्लान में सक्सेस हो जाते हैं। तो डलहौजी कह देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी annexed the kingdom of Awadh in 1856 on the pretext of mismanagement. The throne of Wajid Ali Shah sent a wave of resentment and anger throughout the country. यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको इस तरह से बहाना चाहिए था किसी भी एरिया को अपने अंडर लाने के लिए। अगर कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं चल रहा तो वहां पे मिस मैनेजमेंट दिखाते हैं, कहीं मिस मैनेजमेंट नहीं तो आपस में रूलर को लड़ा करके, या फिर उनके जो कमांडर ऑफ आर्मी है या फिर जो उनके मिनिस्टर है उनको खरीद करके और उनसे अंदर की इंफॉर्मेशन ले लेना और फिर उनको रिप्लेस कर देना। इस तरह की चीजों को उन्होंने अडॉप्ट कर रखा था और उसी से आगे सक्सेस होते चले जा रहे हैं। जब वो 1857 में मिसमैनेजमेंट के नाम पे वाजिद अली शाह का जो एरिया है अवध वो कैप्चर करते हैं, तो सबसे ज्यादा रिजेंटमेंट कहीं से देखने को मिलता है, ऑपोजिशन कहीं से देखने को मिलता है, वो लखनऊ के जो मॉडर्न लखनऊ है, इट वाज नोन एज अवध, अवध के आसपास के इलाके से मिलता है।
इसमें कई सारे मूवी भी बनी गई, जैसे गुमराह जान मूवी है जो दिखाता है किस तरह से ब्रिटिश आर्मी पहुंचती है, वाजिद अली शाह को कैप्चर करती है और किस तरह से पूरा प्लंडर करती है, पब्लिक भाग रही है। तो कभी आप मूवी ये देखें गुमराह जान, तो उसमें बहुत अच्छी मूवी है, उसमें सॉन्ग्स बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन कभी आप देखें तो उसमें देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा रिजेंटमेंट कहीं, सबसे ज्यादा अपोजिशन कहीं से मिलता है ब्रिटिश को, वो अवध से मिलता है। और इसीलिए अवध, चूंकि अवध में सिर्फ वाजिद अली शाह या उनकी वाइफ या उनकी आर्मी की तरफ से नहीं, बल्कि कॉमन मासेस यूनाइट होकर के कॉमन मासेस उनके अगेंस्ट खड़ी होती है और जबरदस्त अपोज करती है। और ब्रिटिश को यूं समझे कि आप, ब्रिटिश अगर वहां पे हार जाती तो फिर ब्रिटिश को यहाँ से भागना पड़ा। सो अवध वॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। हालांकि और भी हमें जगह देखने को मिलता है, लेकिन अवध ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी है, वीर कुंवर सिंह है, नाना साहब है, मौलवी अहमदुल्लाह, सो मेनी पर्सन्स वर देयर टू अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो आगे देखते हैं, the dethroned of Wajid Ali Shah sent a wave of resentment and anger throughout the country. The state was exploited economically and the Nawabs were reduced to a position of complete dependency on the British. Thus, the Nawabs neglected the administration of the state, which was used as an excuse by Dalhousie to merge it with the British Empire. कहानी छोटे छोटे बहाने लेकर के, जैसे कि, और ये सारी चीजें कहां से शुरू कर दी थी उन्होंने, जस्ट आफ्टर दी प्लासी। प्लासी के बाद, प्लासी टुक प्लेस इन 1757। उसके बाद से देखते हैं ये वेट एंड वॉच करते हैं। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें मराठों की डिफीट होती है। फिर पूरी तरफ से क्योस है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है देखने के लिए। और फिर उसके बाद से 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें अगेन कामयाबी किसको मिलती है? ब्रिटिश को कामयाबी मिलती है। ब्रिटिश और इधर से कंबाइंड आर्मी, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब अवध एंड देन आफ्टर जो मुगल रूलर है, इनकी कंबाइंड आर्मी, इनकी डिफीट होती है। और फिर भी देखते हैं कि 1764 में जो डिफीट होती है, पूरी की पूरी दीवानी राइट हो या फिर आपको लैंड रेवेन्यू का जो वही कलेक्शन है वो पूरा ब्रिटिश ले लेते हैं और कहते हैं कि बदले में आपके पास कुछ नहीं है। और इवन कि आपको आर्मी देखना है, आर्मी को सैलरी देखनी है, सिर्फ आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का पावर ब्रिटिश के पास। और वहीं से एक्सप्लॉयटेशन की शुरुआत हो जाती है। और हमने जैसे कि देखा 1856 तक आते आते जो भी छोटे छोटे नवाब रहते हैं, जैसे वाजिद अली शाह है, उनको भी उन्होंने रिप्लेस कर दिया। इस तरह से जो ह्यूमिलिएशन होता है, चाहे वो 1757 हो, 1764 हो या फिर 1856 की जो बात आती है, इन सब में ह्यूमिलिएशन जब देखा जाता है मुगल्स का। और खास करके एक और जो ह्यूमिलिएशन होता है, क्या होता है कि मराठा जब बहुत पावरफुल होते हैं, तो मराठों ने दिल्ली को कैप्चर कर रखा था एंड मराठास वर, महाजी सिंधिया वर गिविंग रेवेन्यू और पर्टिकुलरली पेंशन टू द मुगल रूलर्स। लेकिन उनकी भी डिफीट हो जाती है कब? 1803 में, बैटल ऑफ पथरगढ़ में। So देखते हैं कैसे 1803 the Mughal emperors had been living under the British protection. मराठा को ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया 1803 में। उसके बाद से मुगल रूलर को अपने अंडर में ले लेते हैं, उनको पेंशनर बना देते हैं। तो क्या देखते हैं कि ब्रिटिश जो है वो मास्टर बन जाते हैं दिल्ली एंड इस रीजन में। तो हिज क्लेम्स टू ऑनर एंड प्रेसिडेंस वर रिकॉग्नाइज्ड। द सील ऑफ गवर्नर जनरल बोर द इंस्क्रिप्शंस हम्बल सर्वेंट, यानी कि मुगल रूलर को अपने अंडर में ले लेते हैं, पेंशन देना शुरू करते हैं। और जो भी पॉलिटिकल राइट्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है, ब्रिटिश अपने हाथ में ले लेते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ नॉमिन ऐसा एक ऐसे ही रबर स्टैंप की तरफ मुगल रूलर को रख रखा है। यहाँ तक कि वो सारी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में ब्रिटिश ही आ गए। तो आगे देखते हैं। However, there was a gradual change in the relationship between the Mughal emperor and the governor general. Amherst made it clear to the emperor that his kingship was nominal headship. It was merely out of courtesy that he was addressed as king. Moreover, the emperor was forced to give up residence in the Red Fort and abandon his prerogative of naming his successor. यानी कि यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि भाई अब सक्सेसर आपको डिक्लेयर नहीं करना है, सिर्फ नाम के लिए आप रूल करें, आपके बाद जो भी आते हैं वो हम उनको नॉमिनेट करेंगे। इस right to declare your success after your death. इस तरह देखते हैं बहादुर शाह जफर जो सेकंड बहादुर शाह है, उन तक हमें मुगल रूलर कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में नॉमिनल हेड ही से लेकिन देखने को मिलते हैं।
तो देखते हैं कि the treatment meted out by Governor General to the Mughal Emperor greatly alienated the Muslims who felt that the British wanted to humble their emperor. Thus, it was not surprising that the Muslims and the Hindus felt resentful at the humiliation of the nominal Mughal emperors. तो इस तरह देखते हैं कि मुगल रूलर को अपने कंट्रोल में ले आते, और सिर्फ मुगल रूलर ही नहीं बल्कि जो भी नवाब हैं जैसे या फिर महाराजा थे उनको डिफीट करके, जो राजा महाराजा या प्रिंसली स्टेट जो उनकी सोवरेंटी को पर्टिकुलरली जो उनके पावर को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके साथ अलायंस नहीं करते हैं, उन पे किसी न किसी बहाने अटैक करते हैं, अटैक करके उनके एरिया को कैप्चर करते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि कई सारे जो सस्पेंशन ऑफ पेंशन है वो भी रीजन बनता है रिजेंटमेंट का, अपोजिशन का। So annual pension of Rani Jindan, the queen of Maharaja Ranjit Singh, was reduced from 15,000 pounds to only 1,200 pounds. The pension to Nana Sahib and of Lakshmi Bai of Jhansi was suspended. The titular sovereignty of the Nawab of Carnatic and Tanjore was also abolished. This led them to oppose the British. तो ये भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि रीजन बनता है ब्रिटिश को अपोज करने का। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव भी कॉजेज हैं जो एक के बाद एक बिटर रीजन बनते हैं उनके लिए। So bitter taste of the rule of law, the British introduced the rule of law, which implied the principle of equality in the eyes of the law, irrespective of the high and the low, the rich and the poor, the weak and the strong. However, those persons which they had been enjoying resented this kind of legal system. On the other hand, the poorer and the weaker sections did not get any benefit from the new system due to complicated procedure of the British administration. तो देखते हैं किस तरह से जो रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने, उससे भी बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड होते हैं, और उसके बाद हम रिजेंटमेंट देखने को हमें मिलता है। अनपॉपुलर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, नो डाउट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अभी पॉपुलर नहीं हुआ है, पॉपुलर मासेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्यों? तो ग्रेट रूलर और ग्रेट डायनेस्टी उन्होंने देख रखा होता है। एक मुगल को किसने रिप्लेस किया? तो मराठों ने रिप्लेस किया, या फिर पंजाब के इलाके में हम देखते हैं सिख रूलर्स ने रिप्लेस किया। तो ये उनके अंडर में इनका इंप्रेशन, इनका इन्फ्लुएंस। सो दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ब्रिटिश को अभी भी एलियन समझ रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द पावर और द rule of British. The English officials were not accessible to the people, thus the people could not place their grievances before them as they did during the period of the Mughals. The people also disliked the new system of British administration, which functioned as a machine and lacked personal touch. The English laws were quite strange and the common people could not understand them. इस वजह से शुरू से 1857 में तो और आकर के ओपन हो जाता है कि दे आर स्ट्रेंज, दे आर नॉट फ्रॉम आवर कंट्री, दे हैव कम टू प्लंडर आवर रिसोर्सेज। इस तरह से देखते हैं कि इंडियन मासेस, जो लोकल मासेस है, जो पुअर पब्लिक है, वो उनकी बातों को समझ नहीं पा। प्रिंसली स्टेट्स ने फ्रेंडली अलायंस किया और वो फायदे में रहे, और आज भी वो फायदे में, बिकॉज जो इलाके, जो ब्रिटिश रूल इलाके हैं, जैसे कि आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन जगहों पे जाकर के, कनाडा, इन जगहों पे जाकर के ब्रिटिश के टाइम से। अब देखते हैं क्या है आगे जल्दी So they think exclusion of Indians from administrative posts. The British were of the opinion that the Indians were not suitable for the higher posts in their administrative structure. Indian and racial prejudice were other reasons why the Indians were denied higher position in the administration. Thus, complete exclusion of Indians from all positions of trust and power in the administration and the manning of all higher offices, both in civil government and the military forces, by the British brought forth discontent and a sense of humiliation among the people. क्योंकि हर इंपॉर्टेंट पोस्ट पे ब्रिटिश ने अपने ही लोगों को अपॉइंट कर रखा था, और उनका क्या काम था कि इंडियन पे रूल करना, इंडियन से रेवेन्यू कलेक्ट करना, इंडियन को छोटे छोटे पोस्ट पे रखना,
और उनके थ्रू डिफरेंट वर्क को कराना, उनके थ्रू रेवेन्यू को कलेक्शन कराना। इस तरह देखते हैं कि जो इंडियन को एक्सक्लूड कर रखा गया था, वो भी बहुत ज्यादा रीजन बनता है उनके खिलाफ अपोजिशन का। तो ये सारे रीजन देखते हैं, दिस ऑल comes under the political causes that led to the emergence of the revolt of 1857. इसके बाद से I'm cutting it short. I'm just I would like to discuss about economic causes because ये बहुत ही important cause है, तो यही से हमें ज्यादा इंडियन में हॉस्टिलिटी देखने को मिलती है, ऑपोजिशन देखने को मिलती है। तो क्या देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेस में, जो पहला होगा वो होगा द रूइन ऑफ द मर्केंटाइल क्लास। मर्केंटाइल क्लास बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो जाती है, बिल्कुल डिक्लाइन हो जाती है। सारी चीजें जैसे आई हैव शेयर्ड विद यू कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को लेकर के देखते हैं कि आपको जो एग्रीकल्चर में अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर ओपीएम हो या फिर बाद में टी प्लांटेशन लेकर के आते हैं, और इस तरह से इंडियन प्लांटर्स को, इंडियन मर्चेंट्स, इंडियन पीजेंट्स को फोर्स करते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें। और इसी वजह देखते हैं कि कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर के बाद से चीजें की शुरुआत हो जाती है। So the British deliberately crippled Indian trade and commerce by imposing high tariff duties against Indian goods. On the other hand, they encouraged the import of British goods to India. As a result, by the middle of the 19th century, Indian exports of cotton and silk goods practically came to an end. इससे क्या होता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो बिल्कुल उसका देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? आई एम कटिंग इट शॉर्ट। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग द इंपोर्ट ऑफ कॉटन गुड्स टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड डिस्ट्रक्टेड ऑल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स in the cotton textile industry. When British goods flooded Indian market and threatened the outright destruction of Indian manufacturers, the East India Company's government that ruled India did not take any step to prevent the tragedy. Several Englishmen were of the opinion that free trade and refusal to impose protective duties against machine-made goods of England ruined Indian manufacturers. इस तरह से पूरा देखते ये सारा सिस्टमाइज कर करके ब्रिटिश ने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खराब बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। As I have discussed with you कि they came as a traders, and ट्रेड में सबसे पहले क्या लेके जाते हैं हमारे यहाँ से? हम देखते हैं हमारे से कॉटन ले जाते हैं, कॉटन के बाद स्पाइसेस ले जाते हैं, यहाँ तक के जो वो कटलरी आइटम जो यूज करते थे वो हमारा यूज करते थे। वी इंडियन यूज टू प्रोड्यूस एंड वी यूज टू गिव इट टू देम। बहुत जिस रेट पे हम देते थे उससे ज्यादा प्रॉफिट पे ले जाकर वहां बेचते थे। सो दे वर गेनिंग मच मोर प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन गुड्स, इसलिए वो इंडियन गुड्स को लेकर ले जाने आते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उनके यहाँ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आता है ब्रिटेन में, उसके बाद जब वही दैट लेड टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन 1764 से सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से जो चीजें उनको जरूरत पड़ने लगती है रॉ मटेरियल्स, वो फार एरिया से लेकर के जाते हैं अपने, उसमें इंडिया बिकेम वन ऑफ द सेंटर बना दिया इंडिया को कि यहाँ से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को ले जाकर के, खास करके रॉ मटेरियल्स को ले जाकर के और वहां मैन्युफैक्चर करके उन्हीं चीजों को ला करके इंडिया में बेच रहे हैं, मनमाने रेट पे बेच रहे हैं। और वहां पे जो इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन कॉटन जो बिकता था उस पे उन्होंने हेवी टैरिफ लगा दिया ताकि कोई वहां पे खरीदे नहीं। और इंडिया में भी आकर के इंडियन जो नवाब्स हैं, इंडियन जो रूलर्स थे, उन सबको कहते हैं कि आप जो है हमारी चीजों को खरीदो। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जब प्रिंसली स्टेट्स को रिप्लेस कर दिया जाता तो यहाँ पे ना ही कोई रूलर है, ना ही कोई राजा है, ना ही कोई यहाँ पे नवाब है जो इंडियन क्राफ्ट्समैन को पेट्रोनाइज करे। सिंस एंशिएंट डेज हम देखते हैं कि गुप्ता एज से ही चूंकि फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और हर फ्यूडल लॉर्ड्स अपने एरिया में
कल्चर को, आर्ट को पेट्रोनाइज करते हैं। उसी में देखते हैं कि जो आर्टिजन्स है उनको भी पेट्रोनाइजेशन मिलता है। तो वहां से चीज शुरुआत होती है। मुगल तक हम देखते हैं, नवाब तक देखते हैं कि पेट्रोनाइजेशन मिलता है। उस पेट्रोनाइजेशन की वजह करके हम देखते हैं कि यहाँ का जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट है, इट वाज ऑन इट्स जेनिथ, अपने ऊंचाई पे हमें देखने को मिलता है। तभी ब्रिटिश हमारे यहाँ आते हैं और आकर के पर्टिकुलरली ब्रिटिश उसके, और वैसे तो देखें तो पूरे यूरोपियंस हमारे यहाँ, अगर हमारी चीजें अच्छी नहीं होती इन कंपैरिजन टू यूरोपियंस गुड्स, तो वो क्यों आते? दैट मींस कि वी वर प्रोड्यूसिंग जो चीजें थी वो क्वालिटी की होती थी, जिसका डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो इंडिया आते ही ले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे अपनी पॉलिसी को बना करके इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो इंडस्ट्रीज है, वहां पे ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं कि वो सारा का सारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है और फिर डी अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है। इस तरह से देखते हैं कि वेल प्लान्ड पॉलिसी से इंडियन इकोनॉमी को वो पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो जैसा कि I have discussed in the early part of my lecture about the pressure on land किस तरह से रेवेन्यू इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह किस तरह से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। देखते हैं द मिलियंस ऑफ रूइंड आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन, स्पिनर्स, वीवर्स, स्मेल्टर्स, स्मिथ्स एंड अदर्स from town and villages had no alternative but to pursue agricultural activity that led to a pressure on land. India was transformed from being a country of agriculture into an agriculture colony of British Empire। क्योंकि अब ब्रिटिश क्या करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट अगर आप जानते होंगे, या फिर आप इतवारी सेटलमेंट जानते होंगे, खास करके परमानेंट सेटलमेंट में क्या करते हैं कि न्यू इमर्जिंग जो क्लास है उसको पैसे पे, हाई बिडिंग पे उनको जमींदारी राइट्स दे देते हैं, और उस धीरे धीरे देखते हैं कि जमींदार ग्रुप इमर्ज करता है, और वो पूरा का पूरा लैंड पे जो लैंड होल्डर्स थे, उनकी लैंड को अगर वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते हैं तो उनके लैंड को कन्फिस्केट कर दिया जाता है, उनको कब्जा कर लिया जाता है, और धीरे धीरे बेचारे वो जो लैंड होल्डर्स वो लैंडलेस लेबरर बन जाते हैं, और वही अपने मास्टर के एग्रीकल्चर लैंड पे एग्रीकल्चर करने में इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पे और इस तरह से देखते हैं कि पोजीशन क्या हो जाती है इम्पोवरिशमेंट की। तो इम्पोवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री हम देखते हैं, तो लैंड बीइंग द चीफ सोर्स ऑफ इनकम फॉर इंडियंस, द ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजर्स टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। Various methods of revenue settlement led to the impoverishment and misery of the peasants. They were exploited by money lenders who usually confiscated their land for failure to repay their debt. English settlers monopolized plantations, industries like indigo and tea. The inhuman treatment of the indigo cultivators by the European plantations owners was one of the darkest and most tragic episodes in the history of British rule in India. The economic policies of the British affected the interest of the Indian traders, the manufacturers, craftsmen, and the peasants. This I have discussed with you about these things कि किस तरह से ब्रिटिश की पॉलिसी को लेकर के जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं, मैन्युफैक्चरर्स है, या फिर लैंड होल्डर्स है, सभी की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो या तो मनी लेंडर्स से, जो साहूकार हैं, जो बनिया है, उनसे वो पैसे लेते हैं कर्ज के डेट, और दिन ब दिन उनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर के कर्ज बढ़ता चला जाता है, और एक वक्त आता है कि वो लैंडलेस लेबर और बॉन्डेड लेबर के फॉर्म में देखे जाते हैं। इस वजह से impoverishment of peasants that led to the uprising of 1857। ओके, अब इकोनॉमिक के बाद से, क्योंकि पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक के दोनों मिल करके किस पे ज्यादा इफेक्ट करता है, तो देखते हैं कि सोसाइटी पे। तो सोशियो रिलीजियस कॉजेस क्या थे जो 1857 की म्यूटिनी हो या फिर रिवोल्ट हो, उसके पीछे देखते हैं कि सोशल एक्सक्लूसिवनेस, the British policy of social exclusiveness and arrogant manner towards the Indians created discontent among the Indians. The British forced every native to salute all Englishmen in the streets. If native was on horseback or in a carriage, he had to dismount and stand in a respectful position until the Englishman had passed him. This was an unwritten law through British India. The British could insult, injure, assault and even kill Indian subjects. कोई पूछने वाला नहीं था कि ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं आप इंडिया। यहाँ तक कि दिल्ली में
जहां पे भी वो अपने सेटलमेंट स्टेब्लिश कर रहे हैं, जैसे कि सिविल लाइन दिल्ली में है, तो इट वाज पर्टिकुलरली फॉर उन्हीं के लिए वो एरिया था, वहां इंडियंस वर नॉट अलाउड। वो चाहे पैसे वाले उनके फ्रेंड हो, उन्हीं को परमिशन थी वो भी एक सर्टेन प्लेस तक जाना, यानी कि जहां पे ये अपने कंपनी स्टैब्लिश करते थे, जहां पे कॉलोनी स्टैब्लिश करते थे, वहां इंडियन वर नॉट अलाउड। और यहाँ तक कि रास्ते में कहीं दिख गए तो चाहे वो अपने किसी भी चाहे हॉर्स बैक पे हो या किसी भी चीज को उतार करके उनको सलाम करना था, उनको सैल्यूट करना था। ये सारी चीजें क्या थी, ये रिजेंटमेंट हमें इंडियन में बढ़ती हुई इस देखने को मिलती, इसकी वजह करके। अब देखते हैं सोशल लेजिस्लेशन क्या है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग abolished the practice of sati in 1829 with the support of educated and enlightened Indians such as Raja Ram Mohan Roy. Lord Canning enacted the Widow Remarriage Act drafted by Lord Dalhousie in 1856. These legislation were viewed by the orthodox section in the society as interference by the British in their social and religious practice. The two laws of 1832 and 1852 or 1850 particularly, removing disabilities due to change of religion, particularly conferring the right of inheritance to change of religion, uh, you know, or inheritance to Christian converts were quite unpopular among the Hindus. ये चूंकि वहां यूरोप से ही ये पॉलिसी थी, खास करके ब्रिटिश ने पॉलिसी एनेक्स कर रखी थी, शुरू में तो नहीं लेकिन बाद में, चूंकि पोर्चुगीज डच को सक्सेस शुरू में क्यों नहीं मिल पा रही है, बिकॉज सिंस वेरी बिगिनिंग दे वर हैविंग द पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन, जो कि उनके साथ मिशनरी जो आ रही है वो डायरेक्ट पॉलिसी यही थी कि हम जा रहे हैं, पर्पस क्या है, फॉर द कन्वर्जन। सो पोर्चुगीज और डच को ज्यादा सक्सेस यहाँ नहीं मिल पा रही क्योंकि पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन है। वो काम ब्रिटिश धीरे धीरे करते हैं। ब्रिटिश का सबसे पहला एम क्या था, ब्रिटिश का सबसे पहला एम ये था कि किसी तरह से इकोनॉमी हमारे अंडर में आ जाए, वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट दोनों हमारे अंडर में आ जाए, इकोनॉमिकली जो जितने कोस्टल एरिया है वो हमारे अंडर में आ जाए, जहां पे पोर्ट सिटी है, जहां पे बंदरगाह है वो हमारे अंदर में आ जाए, पैसे हमारे पास आ जाए, ट्रेड हमारी पकड़ में आ जाए, उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन तो आ ही जाए। और वही करते हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक देखते हैं कि वो पकड़ बनाते हैं इंडिया में, उसके बाद पॉलिटिकल पकड़ बनाते हैं, उसके बाद लास्ट जो है वो देखते हैं क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कराते हैं, मिशनरीज को फिर पावर देते हैं कि आप डिफरेंट एरिया में जाइए और फिर कन्वर्जन के लिए। तो देखते हैं कि हालांकि बीच बीच में वो कुछ सोशल वर्क भी करने की कोशिश कर रहे, दिखाने की कोशिश कर रहे कि नहीं हमारा, लेकिन हिडन एजेंडा जो ब्रिटिश का है वो था कन्वर्जन किस तरह से मिशनरी के थ्रू यहाँ पर फैलाया जाए। Missionary activities देखते हैं, there was a strong movement pre in England to spread Christianity in India and convert its Hindus and Muslims subject to that faith. By the Charter Act of 1813, 1813, Christian missionaries were permitted to enter the company's territories in India to propagate their religion and spread Western education. The Christian missionaries took every opportunity to expose the abuses in the Hindu as well as the Islamic religion. They denounced idolatry, ridiculed the Hindu gods and goddesses, and criticized the philosophy and principles of Hinduism and Islam. The teaching of Christian doctrine was made compulsory in educational institute run by the missionaries. Thus, the interference of the British authorities in social customs and practices through social legislation and the encouragement given by the government to Christianity. Missionaries in their proselytizing activities created a sense of apprehension and hatred in the minds of Indians. ये सारे देखते हैं धीरे धीरे जो चीजें हिडन एजेंडा तो बाद में करते हैं, उसकी वजह करके देखते हैं कि इंडियन के माइंड्स में अगेंस्ट ब्रिटिश अगेन जो कंपनी रूल है हेट्रेड फीलिंग आ रही है। तो ये सारी चीजें हमें लिखती हैं इकोनॉमी एज वेल एज सोशल कंडीशन। एंड नेक्स्ट जो कॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, वो आपका मिलिट्री कॉज है। सो सर्विस कंडीशन उसमें कुछ लगे हुए थे, क्या सर्विस कंडीशन थे दैट वी विल डिस्कस इट। The sepoys in the East India companies had a number of grievances which led to the revolt of 1857. The sepoys of the Bengal army were Brahmins and Rajput, had a special grievance of their own. Among them were unsatisfactory conditions of service, encroachment upon their religious customs, and offences against their dignity and self-respect.
They had a strong sense of resentment as their scale of salary was very low compared to their English counterparts. In the guise of enforcing discipline, the British authorities prohibited the Hindus and the Muslim sepoys displaying their religious marks. They were forbidden to wear, vermilion mark on their forehead or turban on their head. The Muslim sepoys were forced to shave off their beard. These restrictions wounded the religious sentiment of the sepoys. Up next to cause here, I'm cutting it short, that is the rental of allowances. The rental of allowances, which the British authorities used to withdraw the allowances after the conquest and annexation of a province and post the same troops in those very provinces on reduced salaries. These measures naturally demoralized the sepoys. In 1844, 4 Bengal regiments had refused to move to Sindh till extra allowance was sanctioned. Mutinous spirit was also displayed in 1849 by the sepoys in various provinces. So इस तरह से देखते हैं कि अलायंसेस नहीं मिलने पे या सही सैलरी नहीं मिलने पे भी sepoys में फीलिंग जो अगेंस्ट ब्रिटिश है वो इमर्ज होती हुई दिखती है। उसके बाद से जो नेक्स्ट जो एक्ट है वो है द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। उसमें के थ्रू इंडियंस के साथ क्या होता है वो जस्ट आई एम कटिंग इट शॉर्ट, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। द इंडियन सोल्जर्स nursed grievances against the British as they were forced to go on expedition to Burma and Afghanistan, which violated their religious scruples. To live among Muslims and to take food and water from them was disliked to their ancient custom. Besides, crossing the seas was, prohibited by the religion, as the one who crossed the river or the oceans forbidden sea was bound to lose his caste. In order to prevent any kind of resistance from the sepoys against their deployment abroad, Lord Canning's government passed the General Service Enlistment Act in 1856. By this act, all future recruits to the Bengal Army were required to give an undertaking that they would serve anywhere their service required. अब जो लॉर्ड कैनिंग अपने एक्ट लेकर के आते हैं दैट पास्ड इन 1856, उसमें ये बताया जाता है कि भाई आपको एट एनी हाउ गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करना है और आपको जहां पे भी कहा जाए जाना है तो आपको एट एनी हाउ जाना है, चाहे अफगानिस्तान हो, सिंध हो या बर्मा हो। बेसिकली क्या होता है कि अफगान में जो अपराइजिंग होता है उस अपराइजिंग को क्रश करने के लिए ब्रिटिश आर्मी को भेजा जाता है जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों है। अफगानिस्तान में हिली एरियाज है, जैसा कि हम जानते हैं स्टोरी कि वहां पे ज्यादातर जो है आपको कंजम्पशन क्या होता है, तो वहां पे ज्यादातर मीट कंजम्पशन होता है। और ये भी था कि एक एक कैमल को एक बार में उसको यूज करते थे एज खाना, और इस तरह से कई सारी चीजें जो थी जो वहां पे वायलेट करते थे रिलीजियस स्क्रपल्स को, जिसकी वजह करके देखते हैं कि ब्रिटिश के अगेंस्ट कंप्लेन किया जाता है। उसी तरह से मुस्लिम्स की तरफ से भी कंप्लेन, दोनों कम्युनिटी की तरफ से ब्रिटिश को कंप्लेन किया जाता है कि हमें ऐसी जगह पर नहीं भेजा जाए जहां पे हमारे अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिश आर्मी कहीं पे भी भेजे जाए वो जाए, इसलिए एक्ट पास करते हैं जिसको हम जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 कहते हैं। इस तरह से देखते हैं कि माहौल बनता चला जाता है उस अगेंस्ट ब्रिटिश। इमीडिएट कॉज जल्दी से क्विकली डिस्कस करते हैं। These factors prepare a general ground for discontent and disaffection among different sections of the Indian people, which required a mere spark to explode into a conflagration. The grease cartridge, provided this spark. In 1856, the government decided to replace the old-fashioned muskets by the infilled rifles. In order to load the infilled rifle, the greased wrapping paper of the cartridge had to be beaten off by the soldier. यानी कि ये चीजें इसमें ये कहा जाता था कि जो इनफिल्ड राइफल है उसको लोड करना है, उसके पहले ग्रीस को
आपको हटा करके फिर उसमें अपलोड करना है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि these were against the religious feeling, particularly in January 1857. बताऊंगा, explain करूंगा. In January 1857, a rumor began to spread in Bengal regiment that the grease cartridge contained the fat of cows and pigs. The sepoys became convinced that the introduction of the grease cartridge was a deliberate attempt to defile their religion. The cow was sacred to Hindus and the pig was a taboo for the Muslims. The sepoys refused to use this cartridge. The authorities regarded this act of defiance of the sepoys as an act of insubordination. The action was taken against them, तो जो सिपाहीज पार्टिसिपेट करते थे उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता था, और यहीं से देखते हैं आउटब्रेक होता है रिवोल्ट ऑफ 1857. So on 29th March, 34th Native Infantry Sepoys Mangal Pandey broke the lines and fired at Lieutenant Govt. Mangal Pandey was arrested and executed at Behrampur, which also had disobeyed the authorities, were disbanded. The first major outbreak that finally led to the revolt of 1857 occurred at Meerut. The sir has rightly said that following the court-martial of 85 sepoys of the cavalry regiment for refusing to use the grease cartridge, on May 10th, 1857, the sepoys broke out in open rebellion, shot their officers, released their fellow sepoys, and marched towards Delhi. On 12th May, the sepoys captured the city of Delhi and occupied the palace of Bahadur Shah Zafar, who was proclaimed as the Emperor of India. Within a short period, the revolt spread to Lucknow, Kanpur, Agra, Jhansi, Central India, Bihar, Orissa, and many other places. However, the Indian rulers, remained loyal to the British and rendered valuable service to the suppression of the revolt. The British were on the defensive during the early part of the revolt. First of all, they made a sustained effort to recapture Delhi from the sepoys. In September 1857, Delhi was recaptured by the British. Emperor Bahadur Shah II was arrested and exiled to Burma, where he died a few years ago. A few years later in 1861 or 1862. Two of his sons and a grandson were shot dead. Thus, the British ended the Mughal dynasty from the Indian scenario. The sepoys besieged the residency at Lucknow. Sir Henry Lawrence and some loyal sepoys lost their lives while defending the residency. In March 1858, British forces captured Lucknow with the help of Gorkha regiment. तो इस तरह से देखते हैं कि जिस होप से मेरठ से आर्मी पहुंचती है दिल्ली, और दिल्ली में उस वक्त बहादुर शाह जफर हैं रूलर, 80 इयर्स 80 साल के बूढ़े हैं, जो कि इन्वॉल्व थे गवर्नमेंट के पेंशन पे, ब्रिटिश के पेंशन पे, और अपनी लाइफ गुजार रहे थे. ही वाज नॉट विलिंग टू लीड द आर्मी. जो सिपाहीज हैं उनको कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि आप ही हमें लीड करेंगे. कहते हैं हमारे पास डिसबैंडेड आर्मी भी नहीं हमारे पास, किस तरह से. तो इस तरह से एक पूरा डिस्कशन चलता है अमंग रूलर और सिपाही जब पहुंचते हैं मेरठ से. बिकॉज मैं आई एम कटिंग इट शॉर्ट, बहुत लंबी स्टोरी है और बहुत टाइम लग जाएगा, तो शॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि शॉर्ट करने में डिस्टर्बेंस हो रहा है. ओवरऑल देखते हैं क्या है कि एट एनी हाउ बहादुर शाह जफर बिकेम टू लीड द आर्मी. और देखते हैं कि कुछ दिन फाइट होती है मई से लेकर के सितंबर तक, और सितंबर में दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है. उसके बाद चूंकि दिल्ली को क्यों कैप्चर किया जाता है, बिकॉज दिल्ली को अगर कैप्चर कर लेते हैं तो मोरली यहाँ पे उनकी डिफीट हो जाएगी. उसके बाद धीरे धीरे पूरा हम ब्रिटिश की पॉलिसी की पूरा जो हम है एक एक करके डिफीट कर करके और सब एरिया को कैप्चर कर लेंगे. और वही होता है. हम देखते हैं कि 1857 दिसंबर तक आते आते ऑलमोस्ट ऑल एरिया अगेन रिकैप्चर बाय द ब्रिटिश फिर से रिकैप्चर कर लेते हैं. कुछ लोगों की ब्रिटिश की जान जाती है उसमें, लेकिन ऑलमोस्ट सब एरिया कंट्रोल में उनके आ जाए. जैसे कि नाना साहब
The adopted son of the ex-Peshwa Bajirao II led the sepoys at Kanpur. Nana Sahib was joined by Tatya Tope. After the recapture of Lucknow, General Campbell occupied Kanpur on 6 December 1857. Tatya Tope joined Rani Lakshmi Bai. The widow of Raja Gangadhar Rao fought against the British. The British under Sir Rose occupied Jhansi. Rani Lakshmi Bai and Tatya Tope proceeded to Gwalior, where the Indian soldiers joined them. The British recaptured Gwalior in June 1858, and the Rani of Jhansi died fighting heroically. Tatya Tope was captured and put to death. A year later, Nana Sahib fled to Nepal, where he died in due course. अब यहाँ पे दो चीजें हमें देखने को मिलती है। एक तो ये कहा जाता है कि तात्या टोपे वो नेपाल की तरफ निकल जाते हैं और फिर उनका पता नहीं चलता है। कहीं पे लिखा जाता है कि तात्या टोपे वाज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ। वैसे ही जैसे कि जो बेगम हजरत महल थी वो भी नेपाल की तरफ निकल जाती है, जिनका पता नहीं चलता है। इस तरह से देखते हैं कि दोनों पर्सनालिटी के बारे में कंफ्यूजन है अमंग द हिस्टोरियन। कुछ का कहना है कि नहीं उनको कैप्चर कर लिया, कुछ का कहना है कि उनका पता नहीं चला। ओवरऑल देखते हैं कि राणा साहब हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, जो तात्या टोपे हो, हजरत महल हो, इन सब को एक के बाद एक डिफीट किया जाता है, उनके एरिया को रिकैप्चर किया जाता है। और देखते हैं कि नाना साहब फ्लेड टू नेपाल वेयर ही डाइड इन ड्यू कोर्स। नाना साहब जब नेपाल जाते हैं उसके बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। इस तरह से देखते हैं कि पूरा एरिया सेंट्रल जो इंडिया वो कैप्चर में आ जाता है। Then after Rohilkhand, in Rohilkhand, the revolt began at Rai Bareli in May 1857, where Muhammad Hassan Khan led a force of about 10,000. Rana Beni Madho Singh of Saharanpur had a personal following of about 15,000, and Gajadhar Singh of Gorakhpur commanded a force of 51,000. All of them attacked British position in their respective region and rallied around the Begum Hazrat Mahal. Indian rulers had actively cooperated with British in suppressing the revolt. The ministers of Gwalior, Hyderabad and Nepal also rendered their support to the British. Thus, the first major attempt on the part of the Indians to overthrow the British power could not succeed. इस तरह देखते हैं कि ब्रिटिश को सपोर्ट मिल रहा है और कई सारे प्रिंसली स्टेट्स जो है, जैसे कि आई हैव जस्ट शेयर विद यू, कि सपोर्ट में आते हैं और उनकी सपोर्ट की वजह करके ब्रिटिश को कामयाबी मिल जाती है। कैसे? ब्रिटिश जो इंडियन जो फाइट कर रहे थे 1857 में या उससे पहले जो दे स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस, सबसे पहले फाइट करने के लिए ब्रिटिश वाज वेरी ब्रिटिश जो आर्मी है वेल ट्रेन्ड आर्मी है, उनके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन जो उनके पास हथियार हैं वो पूरा एडवांस है। इंडियन जो है उनके पास या तो स्वॉर्ड है, तलवारें हैं, या फिर उनके पास आर्चरीज है। ब्रिटिश के पास चूंकि उनके पास मस्केट्स है, कैनन है, वो ब्रिटिश की आर्मी चूंकि इंडियन रहे हैं तो उनकी चीजों को यूज कर रहे हैं। इंडियन के पास कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है। जो भी बॉर्डर इलाके हैं, चाहे वो आपका गुजरात का इलाका हो या फिर आपका इधर चाइना से आना हो या फिर दूसरे एरिया से हो, जो नेपाल इनके सपोर्ट में, इधर गुजरात इनके सपोर्ट में, इधर राजस्थान उनके सपोर्ट में, सो हर जहां जिस एरिया से इनके पास आर्म्स आना था वो एरिया ब्रिटिश के सपोर्ट में है। तो कैसे इनको आर्म्स की हेल्प मिलती? दूसरा ये कि ब्रिटिश के पास देखते हैं कि कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट है, उनके पास टेलीग्राम है। इंडियन के पास क्या है कि एक आदमी को भेजते थे हॉर्स के थ्रू या फिर पिजन के थ्रू, कुछ पिजन कबूतरों के थ्रू जो मैसेज भेजते थे उसको पकड़ लिया जाता था, तो हॉर्स के थ्रू भेजने में टाइम लगता था। यहाँ पे ब्रिटिश जो फौरन क्या करते हैं, टेलीग्राम कर देते हो। इस तरह से हमें एविडेंस मिलता है, बिकॉज मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया बच्चों, हमें एविडेंस, वी हैव फाउंड एविडेंस दैट के जहां जैसे ही दिल्ली के सराउंडिंग्स में मेरठ से जो आर्मी आती, सिपाही आते हैं, वैसे ही ब्रिटिश ने हर एक अपने डिस्ट्रिक्ट पे, कानपुर या इंपॉर्टेंट सिटी पे वो टेलीग्राम कर देते हैं। और उस टेलीग्राम की वजह से जो इंडियन आर्मी जो ब्रिटिश के अंडर में थे उनसे कन्फिस्केट कर लिया जाती, उनके आर्म्स, उनके हथियार, जो उनके मस्केट से बंदूक थे, जो भी चीजें वो इस्तेमाल करते थे उनसे ले करके और स्टोर में रख दी गई, ताकि ये यूज करेंगे, हमारे अगेंस्ट चले जाएंगे और फिर अपने साथियों का ये साथ देंगे। इस तरह से हमें देखने को मिलती है कि आर्म्स भी नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो एट लास्ट
डिफीट तो होनी है। प्लस जो इम्पोर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स है इंडिया में वो ब्रिटिश के सपोर्ट में है, साथ हैं, उनके साथ की वजह करके, और ब्रिटिश आर्मी ऑर्गेनाइज्ड, उनके पास आर्म्स जो है काफी एडवांस है, और फौरन उनको बाहर से सपोर्ट मिलना शुरू होता है। कहाँ से? तो देखते हैं कि नेबरिंग एरिया है या फिर ब्रिटेन से उनके पास सप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त देखते हैं कि फेलियर, ये रिवोल्ट या म्यूटिनी हो जाता है, और उसकी रीजन कई सारे हैं। कॉजेस क्या है वो देखते हैं जल्दी से, क्विकली, आई एम कटिंग इट शॉर्ट। Causes of the failure of the revolt क्या है? The sudden and unexpected rising of the sepoys forced the British officials to leave Delhi, Awadh, or Rohilkhand and other places which almost passed under the control of the sepoys. However, the British began to recover them within some months. There were several factors responsible for the British success. Thus, it is important to analyze the causes of the British failure of the revolt of 1857. The revolt of 1857 was localized and poorly organized. Due to lack of communication facilities, the sepoys of the widely dispersed cantonments could not act simultaneously in a concerted manner. The revolt did not spread to wider region of the country. Armies of the Bombay and Madras presidencies remained loyal to the British. There was hardly any disturbance to the south of the Narmada, Sindh, the Punjab, the northwestern frontier province, and Nepal remained unaffected. The need of the time was leader with military capability and political skill who could fuse the scattered elements into a consolidated force of great momentum with a definite policy and plan of action. Such a leader was hard to emerge. Bahadur Shah II was an old and exhausted man, lacked organizing ability. Nana Sahib, through possessed some ability, lacked military leadership. Other leaders, such as Rani Lakshmi Bai, Kuwar Veer Singh, and the Begum of Awadh, were local leaders and lacked all India standing. This led to the failure of the revolt of 1857. The sepoys could not get the support of the population. The revolt did not attract common people who remained passive and indifferent to the revolt. In many places, the revolt was confined to the sepoys only. There was lack of intimate link between the sepoys and common people. Even among the sepoys, many remained loyal to the British. The sepoys lacked common ideal before them. The sepoys at Delhi decided to recover the glory of the Mughal. At Gwalior and Kanpur, Nana Sahib was proclaimed a Peshwa. Rani Lakshmi Bai fought for her Jhansi. The orthodox section among the Hindus and the Muslims were concerned with their religions. There was no unity among the Hindus and the Muslims. The ruling princes did not support the sepoys. On the other hand, they actively assisted the British in suppressing the revolt. Sir Dinkar Rai, the minister of Gwalior, Sir Salah Chand, the minister of Hyderabad, Sang Bahadur of Nepal, and Dost Muhammad, the ruler of Afghanistan, were indifferent to the revolt and actively helped the British against the sepoys. Luckily for the British, by 1857, 1856, the Crimean and the Chinese wars had come to an end. This enabled the British to send additional troops to India to put down the revolt. The sepoys had few guns and muskets. They fought chiefly with swords and spears. On the other hand, the British soldiers were equipped with latest weapons and used the telegraph and railways to their advantages. They could send messages about the revolt, a revolt much in advance, so that precautionary measures could be taken at the other end. ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है. You can easily compare the situation of Indian, army or sepoys or the British army or British sepoys. अब देखते हैं नेचर ऑफ रिवोल्ट क्या था. आई एम कटिंग इट शॉर्ट, बदल दीजिए, टाइम ज्यादा हो रहा शायद. Nature of revolt अगर देखते हैं, Sir John Seeley, a British historian, says that it was a wholly patriotic and selfish sepoy mutiny with no native leadership and no popular support. क्योंकि ब्रिटिश हिस्टोरियन इसको सिर्फ और सिर्फ म्यूटिनी मानते हैं, कहते कि नहीं, एक
सेक्शन ऑफ आर्मी है, सेक्शन ऑफ सिपाही है जिन्होंने अपनी वॉइस रेज की, दे टुक आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, सिर्फ यही मानते हैं। लेकिन नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, जैसा कि वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ टुडेस टॉक, दैट के कहते हैं कि नहीं ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जॉन सीले वाज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, उनका ये व्यू था कि ये सिर्फ एक सिक्योर मिटनी जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नेटिव लीडरशिप नहीं है, उसमें कोई पॉपुलर सपोर्ट देखने मिलता नहीं है। Dr. K. Datta considers the revolt of 1857 to have been in the main a military outbreak, which was taken advantage of by certain discontented princes and landlords, whose interests had been affected by the new political order. V.D. Savarkar, in his book *The Indian War of Independence* (1857), has said that Savarkar called the revolt the first war of Indian independence. Dr. S.N. Sen, in his book *1857*, considers the revolt as having begun as a fight for religion, but ending as a war of independence. R.C. Majumdar, however, considered it was neither the first nor national war of independence, as large part of the country remained unaffected and many sections of the people took no part in the upsurge. So these were the historians have come up with their opinion about the revolt of 1857. Again repeating it to you कि ब्रिटिश जो है वो म्यूटिनी कहते हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो है इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, ये आपको नेशनल मूवमेंट इसको मानते हैं। According to some Marxist historians, the 1857 revolt was the struggle of the soldier, peasant, democratic combined against foreign as well as feudal bondage. M.N. Joshi also says that he is the Marxist historian. He is also of the opinion that it was first war of independence. Jawaharlal Nehru considered the revolt of 1857 as essentially a feudal uprising, though there was some nationalistic element in it. M.N. Roy felt the revolt was a last-ditch stand of feudalism against commercial capitalism. So these were the view of different historians. Now what were the consequences of the revolt of 1857 or the mutiny? Even before the revolt could be suppressed fully, the British Parliament on August 2nd, 1858 passed an Act for the Better Government of India. The Act declared Queen Victoria as the sovereign of British India and provided for the appointment of a Secretary of State for India. The direct responsibility for the administration of the country was assumed by the British Crown and company rule was abolished. The assumption of the government of India by the sovereign of Great Britain was announced by Lord Canning at a Darbar at Allahabad in Queen's Proclamation issued on November 1st, 1858. The concept of divide and rule was adopted, with separate units being created on the basis of caste, community, and region. Recruits were to be drawn from the martial races of Punjab, Nepal, and northwestern frontier who had proved loyal to the British during the revolt. The Army Amalgamation Scheme of 1861 moved the company's European troops to service of the Crown. Further, the European troops in India were constantly revamped by periodical visit to inland, sometimes termed as the linked battalion scheme. So अब देखते हैं कि ब्रिटिश में ये चीजें फैल गई थी कि अगर जरा सा और लिंगर ऑन होता या जरा सा और ये रिवोल्ट आगे बढ़ता तो डेफिनेटली उनकी डिफीट होने वाली थी। इसलिए फौरन उन्होंने, जैसे उनको कामयाबी मिलती विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स, फौरन उन्होंने एक्ट पास किया on 2nd August, that is known as Indian Act of 1858. इस एक्ट ने बेसिकली जो शॉर्टकमिंग्स थी, जो कमियां थी, उस कमियों को फिलअप किया। जो फोर्सफुली रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट करना छोड़ दिया और कहा कि नहीं, इनको साथ लेकर के चलना है। अगर जरा सा और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया होता इंडियन ने तो अब डेफिनेटली ब्रिटिश की हार होती और ब्रिटिश को यहाँ से जाना पड़ता। और ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा भी है, इनफैक्ट पार्लियामेंट वहां पे स्टेटमेंट दी है। तो देखते हैं कि फॉरेन कंपनी को हटा करके और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने विक्टोरिया ने अपने अंडर रूल में लिया और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
अपॉइंट किया और कहा कि आप जाकर के वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालिए। इसे देखते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म होता है और कंपनी रूल से फिर देखते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट रूल ब्रिटिश के अंडर में इंडिया आ जाता है। ऑफ कोर्स इन सारे चीजों का कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट देखते हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके फीचर्स क्या है 1857 का रिवोल्ट का, वो थोड़े से में देन आई विल कंक्लूड दिस टुडेस टॉक। तो देखते हैं कि द रिवोल्ट हैज बीन कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ओपन अ ग्लोरियस चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल इन इंडिया। द रिवोल्ट इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस सर्विसेज ऑफ पेट्रियटिज्म। यही से हम देखते हैं पेट्रियटिज्म की फीलिंग और बढ़ने लगती है, नेशनलिज्म की, नेशन स्टेट्स की कॉन्सेप्ट आने लगता है। It produced many heroes like Rani Lakshmibai and Tatya Tope. It gave patriotism to future generation people. It made Indians aware of the true nature of the British. The participation of common people, rulers, soldiers, students, and others gave the revolt its popular character. Many people and rulers whose survival threatened were drawn into the revolt. So this was all about 1857 revolt. I have cut it short. I had so much information to discuss with you, but due to the lack of time, I have tried to share these information with you, my dear students. Thank you so much. Thank you so much, sir, for such a delighted information. Now, the platform is open for the questions. Sir, we have few questions in the chat box. Now, I will read it one by one, so please answer. The first question is, should we call 1857 mutiny the first war of independence or not? If yes or no, why? We have not reached yet a final conclusion. I have discussed with you in the early part of my lecture that the British historian or European historian has called this as a mutiny. उनका कहना यह था कि एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सिपाहीज और ने पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश। लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियन है, पर्टिकुलर जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है, वो ये कहते हैं कि अब तक तो मूवमेंट चला आ रहा था कि कुछ ना कुछ होना, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा होना है। तो छोटे छोटे जो एजिटेशंस थे अगेंस्ट ब्रिटिश, वो फाइनली दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ ग्रेट मूवमेंट दैट इज कॉल्ड एज रिवोल्ट ऑफ 1857। सो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो है, जो इंडियन हिस्टोरियन है, उनके अकॉर्डिंगली इट वाज अ नेशनल मूवमेंट, इट वाज ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फाइनल कंक्लूजन पे कोई नहीं पहुंचता, अलग अलग परसेप्शन है इस मूवमेंट को कहने में। ब्रिटिश, अगेन रिपीटिंग इट टू यू, कि यूरोपियन जो है वो म्यूटिनी कहते हैं, इंडियन और नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो है वो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं या फिर नेशनल मूवमेंट कहते हैं। Thank you, sir. The next question is, sir, the concept of nation is yet not developed in 1857, as whole India is divided into many regional states. Then how can we call 1857 as a nationalistic war of independence? Yeah, it was this movement was particularly in central and northern part of India. Large part of India was not involved in this movement. जो नॉर्थ इंडिया है और सेंट्रल इंडिया है, यहीं के लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया उस टाइम देखते हैं कि पर्टिकुलरली आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल, और जब मराठा आते हैं तो मराठा दे ट्राइड टू यूनाइट होल कंट्री, पूरे एरिया को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं और उन्होंने यूनिफाई किया भी था। लेकिन जब मराठों की भी डिफीट होती है तो इंडिया divided into among several small and big states, जिसको princely states कहते हैं, और उस छोटी छोटी चीजों के लिए they were fighting with each other। अपने पर्सनल वहां पे कॉजेस देखते हैं जो इंडियन रूलर्स हैं, तो वहां पे पर्सनल कॉज के लिए some they stood up against the policy of British, and some they favor
जो ब्रिटिश की पॉलिसी है उसको कुछ लोग फेवर करते हैं। इसलिए हम इसको जो हिस्टोरियन पर्टिकुलरली वीर सावरकर या भी जैसे मैंने बताया कि आपको अदर हिस्टोरियन जैसे पीसी जोशी ने भी और जो अदर इंडियन हिस्टोरियन दे हैव क्लेम दैट इट वाज अ नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ओवरऑल, क्योंकि जो एक्सप्लोरेटेड जिनका एक्सप्लोटेशन हुआ था इसमें जैसे पेजेंट्री क्लास सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, आपको आर्टिजन क्लास सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, और वो जमींदार लैंडलॉर्ड जिनकी जमीनें चली गई थी या जिनकी जमींदारी चली गई थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, या फिर वो स्टेट जिनको किसी न किसी वजह करके जैसे सब्सिडरी अलायंस की वजह करके या फिर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह करके उनका स्टेट उनके हाथों से निकल जाता है, दे टू पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट। और इस वजह करके जो हिस्टोरियन वो कहते हैं कि चूंकि ये सेक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, लार्ज सेक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस वजह करके इसको हम नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या नेशनल मूवमेंट हम कह सकते हैं। Thank you, sir. The next question is, sir, many parts of India was not taking part in the revolt, including Madras and Bombay regiment, many kings and the educated middle class as well. Considering this, can we call it as a regional revolt rather than a national revolt? नेशनल रिवोल्ट और It can we call it as a regional revolt rather national revolt? no, we cannot call as a regional revolt. Why? Because the last section of our Indian society to participation in this movement, as I have said here with you in the last answer, that के जमींदार जो जिनकी जमींदारी चली गई थी, पेजेंट्स ज्यादातर लैंडलेस लेबर हो गए थे, जो किसके यहाँ वर्क कर रहे हैं, जो ब्रिटिश सपोर्टर्स लैंडलॉर्ड्स हैं उनके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं फोर्सफुली, या फिर उनको फोर्सफुली अपने ही एग्रीकल्चर लैंड पे एग्रीकल्चर उनके अकॉर्डिंगली, as I said to you that कि ओपियम हो या फिर आपको टी प्लांटेशन करना पड़ रहा, तो वही सेक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है। आर्टिजन क्लास भी पार्टिसिपेशन कर रहा है लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्रीज कंपनीज ओपन हो रही है बाय द ब्रिटिश, उसमें उनको वर्क मिल रहा है। हालांकि जो आर्टिजन क्लास है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बिकॉज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है अनएम्प्लॉयड होते हैं, अनएम्प्लॉयड होने की वजह करके देखते वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि जो एरिया है, जैसे कि आपने कहा कि गुजरात और नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कहीं कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेशन है, जो खास करके जो हिंदी बेल्ट है जो आज हम कहते हैं वहां पे पार्टिसिपेशन है। तो लास्ट जो एरिया है पर्टिकुलरली जो सेंट्रल इंडिया का और नॉर्थ इंडिया का, वहां के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बेसिस पे हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट वाज अ नेशनल मूवमेंट, इट वाज नॉट अ रीजनल मूवमेंट। हालांकि रीजनल कॉजेज हमें देखने को मिलते हैं, हर रीजन में कुछ ना कुछ कॉज है, उसके लिए वो फाइट करते हैं, हिस्टोरियन ये भी कहते हैं। लेकिन ओवरऑल हिस्टोरियन, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का कहना है इट वाज अ नेशनल मूवमेंट, क्योंकि आगे चल करके यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आती है, और यही आफ्टर 90 years of 1857 के बाद से 1947 में completely we got independence। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि यही से शुरुआत हो जाती है नेशनल मूवमेंट की। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट इट वाज अ नेशनल मूवमेंट। Yes, sir. The next question is, sir, the system of permanent settlement not only had economic consequences but also gave rise to new social structure in Indian society. How can we analyze it? Yeah, because देखते हैं we have seen that just after the battle of Plassey, British they started experiment start करते हैं, and they started experimenting with this revenue system because they were not aware about this kind of how to collect land revenue। तो जैसे कि हमने देखा है कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट होता है, और बेसिक पर्पस बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी to understand the nature of Indian administration and the collection of land revenue। तो देखते हैं कि
जो एक्सपेरिमेंट करते हैं लैंड रेवेन्यू का, तो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल से स्टार्ट होती है, करते हैं बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। पर्टिकुलरली बंगाल वाज द रीजन वेयर दे इंट्रोड्यूस दिस परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी सेटलमेंट भी कहते हैं। क्योंकि पहले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल उनके जमींदार या जागीरदार रेवेन्यू ऑफ कलेक्ट करते थे, और दे वर नोइंग हाउ टू कलेक्ट एंड हाउ मच टू कलेक्ट फ्रॉम द पेजेंट। वो जानते थे, और एक पर्टिकुलर क्लास होता था, जैसे कि मैंने कहा जमींदार और जागीरदार। जमींदार जागीरदार के लिए कलेक्ट करते थे, और जागीरदार जो है रूलर के लिए कलेक्ट करते थे, या फिर जमींदार नवाब के लिए कलेक्ट करते थे। तो दे वर नोइंग हाउ टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। लेकिन जब वो ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट करते हैं, तो अब ये पर्टिकुलर एरिया को एक रेट लगा देते हैं कि इस रेट में आपको मीन्स यू हैव टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट टू ब्रिटिश ब्रिटिश, एंड उसके अलावा आप चाहे तो जितना आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लें। अब और टाइम भी देते हैं, यूज टू गिव टाइम, इस टाइम तक आपको इतना पैसे पे कर देना। अगर आप इतना पैसा पे नहीं करते हैं तो ये राइट आपसे लेकर किसी और को दे दी जाएगी। और ये भी राइट दिया कि आप चाहो तो दूसरे जमींदार को भी आप राइट्स बेच सकते हो, और उससे पैसे लेकर के और आप ब्रिटिश को पे कर दो, या यू कैन अर्न योर ओन प्रॉफिट। इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट ने एक तो ऐसा क्लास इमर्ज किया जो पैसे जो जमींदार क्लास से नहीं था, लेकिन इफ दे वर हैविंग मनी सो दे कैन बिकम जमींदार ऑफ दैट एरिया। अगर वो उनके पास पैसा है तो पैसे पे कर करके और वहां से वो जमींदारी राइट्स ले सकते थे। यस पार्डन। तो इस तरह से देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट ने, लेट मी कंक्लूड दिस आंसर, परमानेंट सेटलमेंट ने न्यू सोशल क्लास को इमर्ज करने में हेल्प किया। जिसके पास पैसे थे वो जमींदार बन रहे हैं पैसा पे कर करके, और जो ट्रेडिशनल जमींदार क्लास थी पहले से चली आ रही है, अब उनके हाथ से जमींदारी राइट जा रही है। क्योंकि अगर वो पैसे नहीं पे कर सकते थे तो उनकी राइट्स लेकर के दूसरे को दे दी जाती थी। इस तरह से है। एक क्वेश्चन और क्या है, आप बता दें मुझे। How can we conclude? सर इसका अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी एनालाइज द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 owes its failure as much to ideological issues as to logistical issues? Pardon? फिर से रिपीट करेंगे, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी मेरे पास। हाँ, how can we? Sir, how can we analyze that the great uprising of 1857 owes its failure as much to ideological issues as to logistical issues? Very correct question and very good question. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करने में, इनफैक्ट बेसिकली क्या देखते हैं, सिंस वेरी बिगिनिंग हु वर इन्वॉल्व इन 1857 रिवोल्ट, बेसिकली देखते हैं कि हालांकि आइडियोलॉजिकल इंटरफेरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है, वही लोग इन्वॉल्व हैं जो जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। So exploitation के accordingly they stood up against the British. चाहे again repeating it to you, चाहे वो landless laborer हो, जमींदार क्लास हो, आर्टिजन क्लास हो, जिनका exploitation ब्रिटिश के हाथ में ज्यादा होता है, वो without any ideology they stood up against the British policy. जहां तक मैंने स्टडी की है, कुछ ज्यादा आइडियोलॉजी हमें देखने को इसमें नहीं मिलती है। कॉमन मासेस जो है, पॉपुलर मासेस का इसमें इन्वॉल्वमेंट था इस 1857 के रिवोल्ट में। क्योंकि सिपाही भी अगर पार्टिसिपेट करते हैं, अगर रिवोल्ट करते हैं, तो उसमें भी अपना उनका कॉज था। तो कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी हमें उसमें रिवोल्ट में देखने को नहीं मिलती। हाँ, एक है कि नेशनलिज्म की फीलिंग वहां पे आ रही है, और जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं कि नेशनलिज्म का फीलिंग आ रही है, तो इसको हम एक आइडियोलॉजी कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट अप्रोच इमर्ज हो रहा है। नेशनलिस्ट अप्रोच में आइडियोलॉजी की वजह करके दे large number of people they stood up against the policy of British. Yes. The next question is, sir, we know the revolt was failed. Sir, will you throw the light on what was the plan of the rebels
after the success of the revolt? आफ्टर दी अगर रिवोल्ट सक्सेस हो जाता, नो डाउट, तो इससे यू नो अगर रिवोल्ट सक्सेस हो जाता तो नो डाउट ब्रिटिश को यहाँ से वापस जाना पड़ता। ब्रिटिश ने, जैसे मैंने बताया कि व्हेन दे पास दिस एक्ट, द एक्ट, इंडिया एक्ट ऑफ 1858, उसमें उनको बहुत सारी चीजें जो 1857 से पहले कर रहे थे, उन सब सारी चीजों को हटानी पड़े थे, डिलीट करना पड़ा था। उन सब चीजों को कहा था कि अगर ये इस तरह के मूवमेंट और भी चल गया अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो नो डाउट हमें इंडिया से वापस जाना पड़ता। तो अगर ये रिवोल्ट सक्सेस हो जाता तो ब्रिटिश को इंडिया से वापस जाना पड़ता, और फिर उसके बाद से देखते हैं कि इंडियन जो है वो मिल करके, चूंकि यहाँ पे ही देखते हैं कि देयर वाज सो मच यूनिटी अमंग द मुस्लिम और अमंग द इंडियन मासेस, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, सब यूनाइट होकर फाइट कर रहे हैं। इसी वजह करके जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ 1857 दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी दैट इज नोन एज डिवाइड एंड रूल। इनको डिवाइड करो और रूल करो। तो अगर ये रिवोल्ट सक्सेस हो जाता तो इंडियन मिल कर करके, यूनिटी यहाँ पे थी, तो इंडियन मिल कर करके रूल करते और एक अच्छा हमें गवर्नमेंट देखने को, अच्छी सरकार हमें देखने को मिलती आफ्टर द ब्रिटिश। थोड़ा सा इसको और एनालाइज कर करके मैं क्वेश्चन का आंसर दे देता, लेकिन चीजों को थोड़ा सा मैं चीजों को सही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं इसको और अच्छा आंसर कभी, जो स्टूडेंट जिन्होंने पूछा है, उनको पर्सनली फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। Yes, sir. The next question we have, sir, can we say that the common resentment which people had against the British also acted as a binding force which converted the regional revolts of Mutiny to what is now arguably called the First War of Independence? Since there was a common goal of taking action against the British, can we infer that the idea of modern India as recognized by British was first brought forward because of the actions of the British only? Actually, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, that's why I'm not getting your question. Where is written that question? कहाँ पे लिखा हुआ है? Sir, it is in the chat box. Here in chat box. Who has asked this question? Yes. Shantanu? No, sir. Aryan Rana. Where is this question? Aryan. Roll number 574. B. Yes. We can say that common resentment which people had against the British also acted as a binding force which converted the regional revolts of Mutiny to what is now arguably called the First War of Independence. Since there was a common goal of taking action against the British, can we infer that the idea of modern India? Yes, we can say that the idea of modern India, that was that we started using this kind of word after the War of Independence. Why? Because Indians fought unitedly against this British policy. जो भी फाइट करते हैं कहीं ना कहीं यूनाइट होकर के, इसलिए जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट कि यूनाइट होकर के फाइट कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि जो टॉप लीडर थे, टॉप लीडर में भी डिसबैंडेड थे, उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो आर्मी से। और दूसरा मैंने बताया था कि आपसे कि उनको पास आर्म्स का सप्लाई नहीं हो रहा, जो जिस एरिया से आर्म्स आना था उस एरिया में तो ब्रिटिश बैठे हुए या ब्रिटिश के सपोर्टर्स बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि कॉमन मासेस का साथ था, लेकिन वो साथ आर्म्स के साथ नहीं था, एक मोरल सपोर्ट था। उस मोरल सपोर्ट पे कितना फाइट करते ब्रिटिश से। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि इस बेसिस पे हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट कि अब एक नया इंडिया हमें देखने को मिल रहा है, और वो इंडिया जो बहुत जल्दी यूनाइट होकर के अगेंस्ट ब्रिटिश वो फाइट करने वाला। और तभी मैंने कहा कि विद इन 90 इयर्स आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, विद इन 90 इयर्स वी गॉट इंडिपेंडेंस। 1857 के बाद से 1947 में देखते कई सारे अगेन मूवमेंट चलते रहते हैं, मूवमेंट रुकते नहीं है। और फिर
वहीं से फिर जो कुछ लीडर्स इमर्ज करते हैं जो आप जो सोशल इवल्स है सोसाइटी में या सोशल जो डेवलपमेंट करना था उस डेवलपमेंट को करते हुए वहीं पैट्रियटिज्म की फीलिंग आने लगती है वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर के और उस एजुकेशन ने नेशनलिज्म जो पैट्रियटिज्म की जो फीलिंग है उसको बढ़ा करके और कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे थे और वी achieved that goal, that is we got independence in 1947. Yes, sir. So now we have the last question of today's session. Sir, as a student of history, how can we conclude this topic? Because we have different schools of historians who have described this revolt in their own way. We cannot conclude this answer because we can say that this, according to Indian historian, this movement was revolt by the large masses of India. Large people took participation, common people took participation in this movement. So we can say that, according to national historian, it was a national war of independence. We cannot say that it was a mutiny, but because British historians are of the opinion that it was a mutiny. So, according to the British historian, we can say that it was a mutiny. लेकिन चूंकि इंडियन हम हिस्ट्री को देख रहे हैं, being Indian history student, we can say that it was a first national war of independence. तो जो सावरकर जी का जो थ्योरी है उसको यहाँ पे हम सही मानते हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं और उनकी बात को सही हम मानते हैं. इस बेसिस पे we can say that it was a first war of independence. Thank you, sir, for answering the questions so patiently and giving us your precious time today. At the end, I would like to invite Khushi Tanwar for vote of thanks. Good evening, everyone. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. On behalf of Dadhichi, the competitive society of Rajdhani College, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Dr. Khurshid Alam, Sir, Faculty of Janki Devi Memorial College of History Department, for accepting our invitation and taking the time out of his busy schedule to grace us with his presence. His extensive knowledge and expertise in the field of history has enlightened us today. Professor Alam Sir's profound insight and thought-provoking arguments have certainly provided us with a fresh perspective on this significant chapter in the history of our country. Now, I would like to thank to our principal, sir, Dr. Rajesh Giri, sir, the convener of the society, Dr. Rajiv Ranjan Giri, sir, for supporting us to organize more such informative webinars. Finally, I would like to thank all of you present over here for making the time to be with us today and helping us to make this event a grand success. Thank you. Thank you so much. We can leave this meeting. Yes, sir. Thank you so much, sir, for your time. Thank you. Thank you. Thank you, sir. शांतनु माइक भैया ओपन कर माइक लो, ऑन आवाज करो। नहीं आ रही. भाई माइक ऑन कर लो भाई. आवाज नहीं आ रही. कैमरा ऑन कर लो. आ रही कैमरा ऑन कर लो सब लोग. कैमरा ऑन कर लो. Okay, thank you so much.
Current